Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 2.1, question number 3, 4, 5. First of all, we have to see the question number 3. See the book. Give one example each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. Now we will see the question, solution of this question. Binomial of degree 35 equal to ax raised power 35 plus b. Binomial because there are two terms और डिग्री 35 है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 35 है. इट इज़ द जनरल टर्म क्योंकि उसने पार्टिकुलर टर्म नहीं पूछा है. देन वी विल राइट द जनरल टर्म. इट इज़ योर आंसर. नाउ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इक्वल टू देयर विल बी सिंगल टर्म दैट विल बी ax raised power 100. इट इज़ आल्सो द जनरल टर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. We will see the question number 4 in your book. Write the degree of each of the following polynomials. तो डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल. इन फर्स्ट पार्ट the maximum power of the variable there are three terms or in these three terms maximum power is 3. Maximum power of the variable is 3. It means its degree is 3. Here in this part 4 minus y square. It means maximum power is 2, तो degree will be 2. Here t power 1, तो maximum power 1 यानी degree will be 1. Here there is no any variable, therefore its degree will be 0 because we can write here 3 into x raised power 0 और x raised power 0 का मतलब degree is 0. Now question number 5. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. Yesterday I told you what is linear, quadratic and cubic polynomials. तो first we have to see here linear यानी whose degree is 1. तो here degree is 2 therefore it is quadratic. Here degree is 3 therefore it will be cubic. Here degree is 2 therefore it will be quadratic. Here 1 degree 1 linear, it will be linear, it will be quadratic. Now you can complete this exercise. Now we will start exercise 2.2. For it first we have to know about the zero of a polynomial. Zero of a polynomial. तो zero of a polynomial px is a number c such that pc equal to 0. तो पॉलिनोमियल इन px का मतलब क्या हुआ. सपोज दैट 2x plus 3 दिया हुआ है. इट इज़ द गिवन पॉलिनोमियल. तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ px. क्यों? क्योंकि ये x वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है तो इसलिए वी कैन राइट इट px इक्वल टू 2x plus 3. इफ वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन वी हैव टू पुट दिस इक्वल टू 0 एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर एंड दैट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर c सच दैट pc इक्वल टू 0 यानी x की कौन सी वैल्यू इसमें रख करके ये वैल्यू 0 हो जाती है. तो दैट विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वी विल पुट द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0. फॉर फाइंडिंग we will put the polynomial equal to 0 and by solving it we will find the value of variable in the given polynomial that will be the zeros of the polynomial. Exercise 2.2 question number 1. Given that px equal to this यानी polynomial in x equal to 5x minus 4x square plus 3 it is given and you have to find p0. p0 मतलब x equal to 0 पर इस polynomial की वैल्यू फाइंड करनी है. It means we have to put at the place of 0 at the place of x we have to put 0. So now we will put here p0 यानी at the place of x we have to put 0. तो equal to 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3. तो it will be 0, it will be 0 and plus 3. तो its answer will be 3. Similarly we have to find p minus 1 in second part. तो p माइनस 1 यानी एट द प्लेस ऑफ x वी विल पुट हियर -1. एट द प्लेस ऑफ x वी विल पुट हियर -1. तो इन राइट हैंड साइड एट द प्लेस ऑफ x वी विल पुट हियर 5 - 1 -4 x के प्लेस पर -1 स्क्वायर
plus 3. Now it will be minus 5, minus 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 4, दैट विल बी माइनस 4 प्लस 3, और इट विल बी minus 9 plus 3, that will be minus 6. It is your answer. Now question number 2, first part. In question number 2 first part, it is given that polynomial in y equal to y square minus y plus 1, and you have to find p0, p1 and p2. These three parts you have to find in the first part of the question. तो py equal to this is given. Now p0 यानी we have to put 0 at the place of y. तो 0 square minus 0 plus 1, or by solving it we can find 1. Now here p1 equal to यानी we have to put 1 at the place of y. तो 1 square minus 1 plus 1 equal to 1. p2 equal to 2 square minus 2 plus 1 equal to 3. Similarly you can do all parts of this question. Now you can complete your exercise 2.2 up to question number 2. Tomorrow we will do question number 3 and 4. Thank you and have a nice day.